you have on 22nd. कहाँ Yes, पे? NFSU और KGMU? sir, it's in Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Okay, Technology, Jaipur. Jaipur. Okay, Yeah, Jaipur. Okay, yeah. Jaipur. Okay. Anyone else? सर मेरा 21st को है NFSU. 21st NFSU. Okay. Anyone? और भी लोगों के थे? Sir, I have on 18th KGMU. 18th Janab, right? और किसी का? Okay, so this will be kind of interactive session. I will like give input also. So, Janab, what you want to know about interview? What kind of idea you have कि क्या होता है या फिर कुछ भी नहीं पता है? Sir, I know from the recorded videos which I watched from UIBS. Sir, course related questions मतलब syllabus related questions होते हैं और dissertation related question हो सकते हैं. ठीक है. ऐश्वर्या, आपने दिया कभी पहले? जैनब, आपने कोई इंटरव्यू दिया है ऑलरेडी और नॉट? No sir, ये first है. ओके. ऐश्वर्या? Yes, sir, I had given the Lucknow Amity one. So mostly they asked questions related to courses, but as such there was no question related to dissertation or project work. So mostly they were related to the course and related to internship also, like what all you did in your internship, what kind of patient you deal with. राइट, राइट. Yeah. और किसने किसने इंटरव्यू दिया हुआ है? और किसी ने कोई इंटरव्यू दिया? नहीं दिया? ओके. आई थिंक और लोगों ने नहीं दिया है या जिन्होंने दिया उनका हो गया, राइट? सो दैट इज ए गुड थिंग. सो फर्स्ट थिंग इज लाइक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज योर एटीट्यूड. That is most important factor when it comes to you can say interview, because they want to know how willing you are and for this like doing this training, and what are the reason why you want to be a clinical psychologist. Understand one thing, everybody, every institute like okay. Okay, Priyanka. Priyanka's mic is not working. It's okay. You can type the query. So it is good if you will type the queries. I will take the questions. So your attitude is very important. As I said, nobody in like this is a professional course. Understand this thing, and you will be required to conduct psychological tests. You will be required to conduct psychotherapy and counseling sessions, and all those things will be there, right? तो आपका एटीट्यूड कैसा है, और यू रिस्पॉन्सिबल और नॉट, बिकॉज क्या होता है टिल इफ वी टॉक अबाउट लाइक एमए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन, सो वहाँ पे क्या होता है कि जिस दिन आपका मन नहीं होता है, यू आर नॉट गोइंग और यू हैव टेकन ऑफ, नोबडी विल आस्क अनटिल अनलेस योर लाइक अटेंडेंस जो है वो बहुत नीचे नहीं जाती है. अर्लियर ये भी नहीं था कि आपको आपके अटेंडेंस का इतना इश्यू नहीं था, बट नाउ ए डेज जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अटेंडेंस काउंट करते हैं. बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू गेट लाइक you will be able to like sit in the एग्जामिनेशन. अच्छा, वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म उतना नहीं होता है, बट व्हेन यू आर इन ए ट्रेनिंग तो वहां पे क्या है कि आप गिने चुने 8-10 लोग हैं, 12 लोग हैं इन ए ओपीडी, और पेशेंट्स आपके अकॉर्डिंग तो आएगा नहीं. पेशेंट तो डेली आएगा, कोई भी मेडिकल कॉलेज क्लिनिक और जो भी है. तो यू हैव टू बी पंचुअल,
जब आप पंचुअल होते हैं, बिकॉज अगर आप नहीं आ रहे हैं एनी केस, इमरजेंसी केसेस में अगर यू आर नॉट एबल टू कम, तो आप अपने कोलीग से, जो भी आपके साथ और स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनीज हैं, उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप मेरे पेशेंट्स देख लेंगे, ठीक है। एंड यू कैन नॉट टेक एनी लाइक लीव randomly, you cannot take. तो ये जो सारी चीजें हैं, that is very important. So somewhere they want to assess that thing also, कि आप कितना पंक्चुअल हैं, कितना प्रोफेशनल हैं, जब आप बात कर रहे हैं या कोई भी सिचुएशन है उसमें किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे। बिकॉज कोई भी हेडेक नहीं चाहता एज ए स्टूडेंट कि पता चला पेशेंट बैठे हुए हैं, 20 पेशेंट ओपीडी में बैठे हैं, या गवर्नमेंट सेटअप्स में तो 100 पेशेंट्स भी हो सकते हैं और 4 स्टूडेंट गायब हो गए उसमें से, तो क्या होगा कि पेशेंट्स तो कहीं से भी आया हुआ है। सपोज जैसे मैं इबहास में था तो वहाँ पे क्या यूपी से, हरियाणा से, हिमाचल से, पंजाब से पेशेंट्स आते थे, तो दे कैन नॉट वेट कि आप अगले दिन देख लोगे या अगले दिन करो, बिकॉज it is a OPD and you have to perform your duties. If you are not performing your duties due to some emergency reason, then you have to transfer your duties to someone else. That is purely your coordination with your colleagues. तो ये समझना होगा। तो somehow they want to assess these things in you when they are asking question, apart from whatever they are asking, ठीक है। And then when you are going for the interview, you should be like professionally, less like formally dressed, क्योंकि क्या होता है कि when you are working in a setup, तो आप एक फॉर्मल ड्रेस में जाते हैं when you are in a professional setup. So वो जब इंटरव्यू में जाते हैं तो थोड़ा सा वो ध्यान रखना जरूरी होता है। And then जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो ये है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं अपने सब्जेक्ट में। सो कॉन्फिडेंस होना ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर ओवर कॉन्फिडेंट होंगे देन अगेन देयर इज ए प्रॉब्लम। इफ यू डोंट नो एनीथिंग व्हाटएवर दे आर आस्किंग, इफ यू डोंट नो then you can say no also, and whatever you know you can tell. For example, as earlier said कि internships के बारे में पूछते हैं, तो आप किसी क्लिनिक पे या किसी हॉस्पिटल में आपने इंटर्नशिप की एमए के दौरान, तो वहाँ पे अगर आपने पेशेंट्स देखे, पेशेंट्स जो भी पेशेंट्स देखे, चाहे वो बच्चे हैं, एडल्ट हैं, ऑटिस्टिक हैं, जो भी जिस भी तरह के लोग हैं, है ना, तो उन पेशेंट्स के साथ आपने क्या किया, जितना किया है उतना ही बताना है। यू विल नॉट से कि यू कैन नॉट से कि मुझे सब कुछ आता है, बिकॉज एट दिस लेवल यू हैव ऑब्जर्व्ड ओनली, सो यू हैव टू like very cautious when you are answering any question of those people, right? तो ये एक important factor होता है। तो जो पता है बताइए, जो नहीं पता है, अगर आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया है पेशेंट्स का, तो whatever you have observed just tell that. Don't say I know how to treat autistic child, how to assess all those things, and they may ask कि क्या आपने assessment भी किए हुए हैं। तो अगर in case कई बार करते भी हैं, तो whatever you did just told that thing only, because as a MA intern you are not allowed to conduct the test. You can observe, so you can say yeah, I have observed, ऐसे ऐसे करते हैं, ये टेस्ट होते हैं। तो क्या होगा कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको ये भी पता है कि यू आर अवेयर व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड, एंड बट यू नो योर लिमिट्स, एंड you whatever you have done that was in like that was ethical also. So वो आंसर्स देना। और सपोज आपने ऑटिस्टिक चिल्ड्रन देखे हैं या ड्रग एडिक्ट्स देखे हैं या सिजोफ्रेनिक्स देखे हैं, जहां भी आपने विजिट किया है, तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप्स, जो आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिकली भले आपको ना पता हो, वो चलेगा, बट थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है,
या ड्रग सब्सटेंस अब्यूज क्या होता है, और क्या कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वॉट एवर देयर यू कैन से एज पर ICD बेसिकली। सो DSM का भी बोल सकते हैं। तो एटलीस्ट बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि ये अगर डिप्रेशन है तो ये 4 सिम्टम्स होते हैं जो हम देखते हैं। तो उनको लगना चाहिए कि आपने पढ़ा है जब आप इंटर्नशिप्स के लिए गए हैं या जो जो भी सारी चीजें के लिए। सेकेंड चीज, समटाइम दे कैन आस्क कि आपको सबसे अच्छा क्या पता है, आप बताओ व्हाट यू लाइक, विच पेपर इन MA यू लाइक्ड मोस्ट। तो सपोज आपको लोग लगा पर्सनालिटी बोला है, तो यू शुड नो विच पर्सनालिटी थिंग, विच पर्सनालिटी डिग्री, पर्सनालिटी थ्योरी। तो एवरीथिंग यू शुड नो प्रॉपरली थ्योरेटिकली, और वो सारा क्लास में वीडियोस में आपके पास ऑलरेडी है। तो ये बहुत ही केयरफुली आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से तैयार करना है ना। एंड नेक्स्ट तो आपका एक तो एटीट्यूड, आपका प्रोफेशनलिज्म, एंड आपका जो इंटर्नशिप है वो। एंड थर्ड थिंग इज एज आई सेड research project. Some, as I said, they didn't ask, but some they can ask. They can ask because that is the most important things that they ask. So वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में क्या चीज इम्पोर्टेंट है कि आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, व्हाई यू हैव सेलेक्टेड दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। तो वो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है वो क्यों किया है, कैसे किया है। बिकॉज रिसर्च की अगर हम बात करें, सो देयर आर 3 थिंग्स दैट आर वेरी लाइक इम्पोर्टेंट। वन इज व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग, एंड हाउ यू विल डू दैट research. That is the research actually. So you should know each and everything. So topic, why you have selected this topic, and what other studies people have done in this area that we write in background studies, और जिसको हम review of literatures बोलते हैं, वहाँ पे करते हैं। and introduction में everything like topic जो भी आपने लिया है, उस टॉपिक के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपके होने चाहिए। सपोज यू हैव डन personality of drug addicts, so you should know what is personality and what is drug addiction, what kind of drugs are there, how you treat them, different modes of treatment, all those things you should study well when you are going for the interview. And देन मेथडोलॉजी आपने क्या यूज की है ना। मेथडोलॉजी क्या यूज की है कि आपकी हाइपोथेसिस क्या थी, आपने टूल्स कौन से यूज किए हैं, उनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी क्या है, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। एंड आपके रिजल्ट्स क्या आए हैं, उसका मतलब क्या है, आपकी स्टडीज की लिमिटेशंस क्या होती हैं। लिमिटेशंस पता है आपको, एनीवन? What are the limitations of the different these like studies? Yes, absolutely. It really depends on what kind of study you're doing. So, for example, if you're doing observational studies, so there will be limitations of an observational study if you're using it for your project. So you just have to list them. So a very good example can be, for example, I did my research on autism and I had to collect data from special educators. So there, the limitation that came across was that the timings of the special educators did not match with my research timing. So it was the exam time going on in the institutions. So that acted as a limitation to my study. But yes, right. But that you can manage also few things. But in general, I am just telling you that can like work for you when you are going for the interview. These are because it is a postgraduate level study. So what we do is we take small samples. So one limitation is you whatever results you get in your study, their implication is very limited.
So you can say ki, I have taken the sample of 100 or 50, whatever you have taken. So that study can be replicated in a bigger sample. Suppose you are in Pune, right? So you have done the study in Pune. So you can only generalize that study in the on Pune population only. So you can say that can be done at all India level or in different states. So that is one on the basis of the sample. That is one limitation. What you are saying, the timing is not matching, and that can be managed, because then you have to uh, change the timing or whatever it is, or you use holidays or something like that. Whatever. Another thing is definitely there is the other thing is what you said, the method, like observation method. So उनकी अपनी limitations होती हैं, experimental methods की अपनी होते हैं, case studies की अपनी limitation होती है. That also you can include. You rightly said, right? And other thing is like जो limitations में आ सकता है कि you can take more variables, because in postgraduate level studies we take 2 or 3 variables only, because we don't have much time. Usually we have maximum 6 months of the time, and taking lot of variables can complicate the study. So that is for PhD level. So because that has much time, like 4-5 years you get, minimum 2 years, maximum 5-6 years you will get. So on the basis of variables you can say that we have taken these variables, and we can include other variables also. Other variables kya ho sakte hain? They can ask what other variables you will like take. Suppose you have taken drug detection. You have visited drug detection center, and there you have taken a few sample of some like Pune or Delhi and NCR. So you have taken the personality and the alcoholism, right? But you can also include the family variables also, like relationship and their like defense mechanism, different other things you can include. So when you will like review the studies, you will get to know other like studies of other people who have included other like variables. So you can say that also. So these are the few things that is very important when you are going to like interview. Other thing is they can ask anything. They can ask anything, because there will be like 4-5 people will be sitting sometime, like in some places there are more people maybe there, like in a bahas and all. So because you can see there are like 5-10 people are sitting, so they can ask anything from the subject, or they can ask some questions, you can say, that is at that is relevant to the present scenario, like COVID related questions, ki how COVID affect like mental health, and what you think about management of these things. All those things you can they can ask, right? तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो स्टडी you should study about that. Other thing is nowadays, like number of people, because of COVID and all, like these you can say someone asked some questions. Okay, Mimamsa, I'll take your question in a while. So what I was talking about, questions related to present scenario like COVID. So और दूसरा चीज क्या हो रहा है nowadays, like more and more people are doing counseling online, telephonic, through video calls, audio calls, and through mails and all. So read about those things also. Ki how they are different from face-to-face counseling, what are the plus and minus points, what are the studies, yeah, because there are studies they say that there is no there is not much difference. Some of them say like there is a difference. So वो सारी चीज़ें, और अगर हम ऑनलाइन करते हैं या टेलीफोनिक करते हैं तो उसके क्या लिमिटेशंस हैं, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें और क्या फ़ायदे हैं. सपोज एज वी नो,
lot of mental health professionals are in a like metros and two-tier cities. Otherwise, in remote areas, there is no one working. So, like if you are doing telephonic or through internet or video calling, so that is easy thing, easy to like reach at in remote areas also, as we know, because of technological advances. जो phone है, internet है, that has like reached to the like remote areas also. So these are the benefits. So you should estimate. I'm not going each and every detail because that you can get from internet and other places. So वो जो current scenario से related questions हैं, you should prepare for that because they can ask. As we know, as I said, कि you don't know कि क्या चीजें होते हैं, and then you should be aware more about clinical psychology field. What is clinical psychology field? What the clinical psychologists do, and what is RCI, and so because these are the again related to your journal awareness about the field. So clinical psychologist क्या है, कितने numbers में है, किस तरह के क्या कहते हैं कोर्सेज इंडिया में ऑफर होते हैं, कौन से बेस्ट कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट एक बार आपको देखना चाहिए. एंड देन स्टडी अबाउट दैट इंस्टीट्यूट. Suppose Asawara is going to Mahatma Gandhi Medical College, Jaipur. So you should know about that college also. कि वो कॉलेज क्या है, कब स्टार्ट हुआ, साइकोलॉजी कब स्टार्ट हुई, and why you want to choose that like institute. Because you can like Mahatma Gandhi Medical College, you can say because it is a medical college, so we will get more good exposure because there will be a lot of like patients. Other institutes, like if you are going for MAT, then again you can say that this is a reputed private university, and they have good tie-ups with other hospitals, so you will get good exposure also. And other things like KGMU, in KGMU also you will get lot of patients, so that kind of merits, and you should know about that institute, so they can ask that kind of things. So be aware about all those things, right? तो ये बेसिक जो थीम होती है इंटरव्यू की, दैट गोज लाइक अराउंड दीज like topics, and specifically if you want to ask anything else, like anyone, you can ask. And theoretical knowledge is important because they can, because whatever you have studied in till MA psychology. So MA psychology is the highest degree in education, as we all know, and after that the research is there, PhD जिसको आप बोलते हैं. तो you should be very good with theoretical knowledge, whatever you have studied in the coaching and your MA and BA, so that should be very clear. Any question from anyone? मीमांसा का क्वेश्चन था, is it a problem if we don't have dissertation or internship in our post? No, it's not a problem. Sometimes they can ask, so you can say in my university the project or like dissertation or internship was not there. So but Mimansa, at the same time you should know about clinical psychology and research process, ki how you conduct research, that you should, because if that was not there, so you cannot do anything in that. But you should be very good with your like concept in research, and so how you prepare research proposal, what is hypothesis, how you select the topic, what is background of the studies, background studies, or so all those things you should ask. हाँ, सोना कुछ पूछना है आपको? You have raised the hand. Anyone? Ananya, Mimansa, Divya, Asarya, Munazza, Harsita, Pooja. Sir, हाँ, yeah.
सर मेरे साथ ऐसे हुआ था कि लास्ट में बहुत कम टाइम बचा था, तो बहुत ऐसे हेस्ट में रैप अप करा था डिसर्टेशन। तो एकदम लाइक आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कहाँ अबाउट इट। कहाँ पे कहाँ पे? सर जैन यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी? जैन यूनिवर्सिटी। अच्छा, पीएचडी के लिए दिया था आपने? नहीं नहीं सर, मास्टर्स के लिए ही। तो मास्टर्स की डिसर्टेशन जो थी वो बहुत ऐसे फटाफट रैप अप करना पड़ा था, ठीक से नहीं हुई थी, मतलब देखो, डेटा कलेक्शन वगैरह हो गया था उसके बाद। ओके, कोई बात नहीं। लेकिन आपको तो अपने अपने स्टडीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि ये जो वर्षा ने बताया, ऐसा होता है। जिनका जो पहले जिनका इंटरव्यू होता है तो दे टेक मोर टाइम, लाइक हाफ एन आवर, समटाइम 45 मिनट ऑल्सो। एंड जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो बाद के लोगों का इंटरव्यू कम टाइम के लिए होता है, बट इट डजेंट क्रिएट एनी डिफरेंस. Most important thing in MPhil when you are going for MPhil interview so is कि आपको अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स पता हो, एंड आपके अगर अच्छा स्कोर है इसमें रिटर्न में, तो वो आपके लिए बहुत इजी रहता है. ओके सर। सोना करें, अगर कोई क्वेश्चन इंग्लिश में है और अगर मैं हिंदी में आंसर करूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, तो इसमें ऐसा है सोना, क्योंकि सारा का सारा जो रिटन वर्क होता है दैट इज इन इंग्लिश व्हेन यू आर इन टू व्हेन यू आर इन योर एमफिल ट्रेनिंग, राइट? तो आप हिंदी में दो या इंग्लिश में दो, लेकिन बोर्ड जो इंटरव्यू बोर्ड है उसको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको हिंदी भी आती है, आपको इंग्लिश भी आती है, बिकॉज बोथ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. इफ दे आर कन्विंस दैट यू नो, like you can communicate in English, you can write in English, that will be a good thing. बिकॉज लैंग्वेज से कुछ फर्क नहीं पड़ता आपकी एबिलिटी या किसी चीज पे, बट ऑल द वर्क दैट दे लाइक इज डन, आइदर इज रिसर्च प्रोजेक्ट और रिपोर्ट राइटिंग्स, वो सारा कुछ मतलब रिटन वर्क जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है. And we have all the whatever books we have, all of them are in English, good books. So that is why आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं आंसर, बट यू शुड नो बट यू शुड कम्युनिकेट देम कि यू नो बोथ द लैंग्वेजेस. And even suppose you are doing anything like going some other state for the interview, so whatever language is there like Tamil, Telugu, जो यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट है, तो वो भी लैंग्वेज अगर आपको पता है और आप वहाँ पे जा रहे हैं तो दैट इज ए गुड थिंग. एनी अदर क्वेश्चन? पूजा, प्रिया, प्रियंका, सौमी, सैरोन, सोना, वर्षा, वृंदा, जैनब. जैनब आपका इंटरव्यू है एंड ऐश्वर्या का इंटरव्यू है, दो लोगों का इंटरव्यू है आई थिंक, है ना? So I just wanted to ask, is there like a time gap between the exam and the interview, like a really long time gap? No. Usually, most of the like institutes take interview within a week, and Mm-hmm. even not a week, only after 1 or 2 days. Suppose today is your exam, so till evening you will get the result, or next day, and then next day there will be interview. So they don't delay those things. But we have seen in few institutes they take time. Like in KGMU also, they have taken in and that जयपुर वन जहाँ पे ऐश्वर्या देने जा रही है महात्मा गांधी, वहाँ पे भी एग्जाम आई थिंक पहले हो गया था या अभी होना है? आई थिंक हो गया है. नाउ देयर इज ए So actually, the exam got date postponed because there was some inspection team. So first, pehle the exam was on 11th, but now it is on 21st. ओके, सो इमीडिएटली हो जाता है मुनासिब, तो ऐसा कोई Yeah, टाइम? the interview is next day only. ओके, Okay, okay. because this is like not any centralized entrance, only like each institute takes his or her like their own entrance exam and interview.
so immediately वो लोग कर लेते हैं, बाहर से भी लोग जाते हैं, so that is why they do that. Okay, sir. और किसी का कोई क्वेश्चन? Sir? हाँ नैना. Yes, sir. So let's say I've been asked a question and I may know a part of some part of the question I know very well. And what if there's some aspect that I don't know? Then how do I deal with it, or how do I say politely that I'm, I don't know, or how do I convey that? Okay, so one thing is because being honest in the interview is very important. Suppose they have asked कि आपने बोला कि इंटर्नशिप आपने की है और सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स देखे हैं. सो इफ दे आस्क कि सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स को ट्रीट कैसे करते हैं, है ना, क्या किया आपने, तो यू कैन से कि आई हैव जस्ट ऑब्जर्व, आई हैव सीन लाइक कि आई हैव रेड केस हिस्ट्रीज देयर, देन मैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे थे उनके साथ बैठे, एंड आई हैव ऑब्जर्व दीज सिम्टम्स, हेलुसिनेशंस, उसने क्या रिपोर्ट किया, दैट यू कैन टेल. एंड व्हेन दे आस्क कि भाई ट्रीटमेंट क्या होता है, बिकॉज यू शुड रीड वॉट एवर यू हैव डन. तो सपोज आपने बोला कि सपोर्टिव साइकोथेरेपी करते हैं उसमें, या डिप्रेशन है तो सीबीटी करते हैं, सो यू शुड नो व्हाट इज सीबीटी, राइट? And then you can say कि I have just observed, they were asking question, they were like clinical psychologists said to the client कि make a thought diary. So whatever you know you tell, and if they say कि आगे क्या करते हैं, then you can say कि ठीक है सर, सर और मैम जो भी हैं कि इतना ही मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया है, सीखा है, उसके बियॉन्ड थ्योरेटिकली तो मुझे पता है ये चीज़ें होती हैं, बट आई हैव नॉट डन these things as I was not allowed to do, or I was not trained in that. So you can say that there is no problem in that. Even they like it. You are honest. You are open for learning. Okay, sir. Anything और किसी को कुछ पूछना है? Because it is very important. They also want to know sometime few students, because I have also taken interviews for MPhil students, MPhil entrance, MPhil admission in Noida when I was in Noida as a faculty. So what like we want to see is कि how open you are. कि ऐसा तो नहीं है कि आपको लगता है कि you know everything, you have done everything, you just need RCI certificate. So if we see something like that, we usually avoid taking those people, because they create problem later on, because they think that they know everything, and they don't like they don't like to be supervised by supervisor clinical psychologist, right? So that kind of problems happens. और किसी का कोई question है? So I have also heard from certain seniors that certain trick questions are asked. So, I remember she had said once that the faculty had asked her a question related to autism. So they said if a child has autism, Related to autism. autism. Okay. Yeah, so they said that if the child has autism and if you have to do a phenomenological study with the child, then how would you do it? Which is So, phenomenological. yes, phenomenological study. So I also gave the answer what is the normal answer. Like, yeah, we'll do this study, that study, and we'll use it because it's very nice. We'll study the phenomena. Autism is itself something which is very uncovering. But the answer was completely different. Okay. So So what is phenomenological studies? yeah, so you study a phenomena through interviews, and it's like a very longitudinal Right. study. So what you will answer? Autism का क्या features क्या होते हैं? Absolutely. Then I studied because I took time and then I understood that autism is a disorder in which speech is the problem. Right. Communication is the problem. Is Communication is the absolutely right. yes. So you can say because it is a problem, right? Where like speech is disturbed, social communication is disturbed, right? So interviewing them is a very difficult thing. So
So Mm-hmm. if you think, right, it is not being right or wrong. If you think it is not possible, you can say it. It is a like problem, developmental disorder in which language and the social communication is like severely affected. So interviewing them or talking about phenomenological studies, I don't think it is possible, right? So maybe it may be possible in Asperger or mild level of autism, but that is also a difficult thing. So Mm-hmm. we should go for like behavior. We should focus on the behavior and other things also. So Right. so that you can say there is, because they want to see how critical you are, like how you can analyze the things. So they Mm-hmm. can ask this kind of question. So don't like be scared कि क्या आंसर दूं, इन्होंने बोला कि यही स्टडी करना है. No, whatever your view is, just put forward. So my question is that how do we deal with such questions if we, you know, feel stuck at certain questions and if we feel we're not able to answer them? So you can And say, if you know, right, it is Mhm. always good to put forward your view, right? Right. If you don't have any idea, idea, or you are very anxious sometimes, so that if you are anxious, that should not be there, because again, वो कुछ problem होगा. So Mm-hmm. लेकिन whatever you know, you should tell that. Okay. है ना? Even if you don't know what is phenomenological studies, then you can say कि I'm not aware about that. I have studied different other methods. है ना? या फिर आपको पता है, then you can say this like this. So, sir, do they give us time to, you know, analyze the question? Because certain questions take time to break, and then you understand, "Arey, acha, हाँ, this could be the answer." हाँ, so Or take your time. That is the key, because you have to be relaxed. right. Sometimes क्या होता है, रात भर हम नहीं सो रहे हैं, परेशान है. Don't, बंद कर दो सब कुछ, because you will not be able to study everything in 24 hours. मतलब between your written examination and entrance interview. So don't study whatever you know. Just respond on that basis. Okay. Be relaxed. If you will not be relaxed, then you will be confused. Sometimes they throw questions जो confusing होते हैं. आप सही भी बोल रहे हो, बीच में कोई बोल देगा, अच्छा आप ठीक बोल रहे हैं क्या? And you are confused then, though you Okay. are saying right thing. So whatever you know, tell that with like confidently. Whatever you don't know, say no. There is no problem in that. Okay, sir. है ना? Because when you are very anxious, then what will happen is you will be confused. So that will create problem. Okay, sir. Thank you. और किसी का कोई क्वेश्चन? Anyone? Priyanka, Priya, Pooja, Mimansa, Harshita, Divya. Okay, if nobody like don't anybody has any question, then what we will do is someone asked me to arrange a session about Ibhas also, right? Who said? Who asked for the same? I said that, sir. Okay, so I'm trying to get some alumni from Ibahas, though I am also from Ibahas, but that is long back. So I'm trying to get someone new who has done like MA, MPhil from Ibahas, because current students, they cannot take these kind of sessions because that will be a problem for them. So maybe next week, maybe before that, we will plan something about Ibhas also. Ibhas and uh, other examination कौन सा आ रहा है? I think there is RINPAS right now, sir, and the rest are done. I mean, the examinations are done. हाँ, नहीं, they are coming up like GMCH maybe like there in November, December जो भी होगा, GMCH का आने वाला है. And there is another good news that in Jaipur maybe there are two more colleges they are starting, universities they are starting MPhil clinical psychology. So जैसे वो information आता है, one is Gyan Bihar University, right?
So keep eye on that. I am trying to get some faculty from there so that you can ask questions, because they are in the process of you can say inspection and all. So अगर वो सारा कुछ सब कुछ ठीक गया तो वहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएगा इसी साल. एंड एक और यूनिवर्सिटी है वहीं पे NIMH है, निम्स है समथिंग, वहाँ पे भी शायद आने वाला है जयपुर में. तो जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों को हम बताते रहेंगे. एंड और इबहास का सेशन हम लोग करते हैं, एंड देन विल ट्राई टू आफ्टर इबहास इफ I'll get faculty from GMCH, I also like bring that faculty. Sir, I have one more thing. So the ones which are new, or also places, जैसे like I am in Rajasthan, so I have seen awareness बहुत कम है. People majorly go to psychiatrist जो बहुत established names है. और तो with MPhil clinical psychology, if you know the college is new and patients इतने नहीं आते हैं, तो मतलब still shall we go for them and aim for those colleges? देखो RCI का अपना एक सिस्टम है, एंड जो यूनिवर्सिटी सेटअप्स क्लिनिकल साइकोलॉजी स्टार्ट करते हैं, दे हैव टू एसोसिएट विद साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिक्स और हॉस्पिटल. जैसे जयपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे दो तीन चीज, जैसे SMS है, SMS में पेशेंट्स रहते हैं काफी. There is one doctor, I think Dr. Shiv Gautam. There are other psychiatrists also. Yes, sir. So they associate with them, and you will get training there under the supervision of clinical psychologists, not psychiatrists actually. So that is not an issue because the RCI ensures those things. Okay, sir. And MIT गुड़गांव भी आने वाला होगा. I don't know. SGT का तो हो गया है. हाँ. Also, Pune में there's this institute, Sasun. I mean, there's this hospital Sasun, where since a year I've been hearing कि MPhil शुरू होगा, but it has not started. So Yes, in Maharashtra there were two, like that place that you said. There Mhm. are many institutes they're trying to start, but that is still there is no news till now. Right. And other one was they have taken RCI, I think, that is in Mumbai, Naval. Amity. हाँ, Naval Defense Hospital something कुछ था, है ना, Navy वालों का. So they have taken the permission, but they have not started yet. That Okay. like 2 years back. So that happens. So until unless start नहीं हो जाता है properly, we cannot say anything. So Okay, sir. we should focus on जहाँ पे चल रहा है already. Okay. है ना? ठीक है. कोई और question? किसी का? So ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यूज ऐश्वर्या एंड और कौन था मैं भूल गया. ऐश्वर्या का इंटरव्यू था और एक किसी और का था ना. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यूज, और कोई भी क्वेरीज होती है Thank you, sir. हाँ, सो यू कैन गेट बैक टू मी. एंड नेक्स्ट कुछ सेशन इसी तरह के और जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिले हम लोग करेंगे, है ना. GMCH और इबहास मेरा टारगेट है फिलहाल, फिर बाकी आगे का देखते हैं, है ना. All right. Thank you, sir. ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, बाय.